everyone, welcome back to your channel, and in this video we will be going to cover the class 12 psychology important questions for 2024. That is, your exam is in I think 1 week. So this video is going to help you how to write answers and how to score well. I had psychology when I was in 12th grade, so my experience, my mistakes, my strategies is going to help you for your last minute revision on our channel. And please subscribe and share our video. So let's move on to the first question. The first question is differentiate. So these are the 2 marks questions. You have to write in 2 marks. So let's begin without any further delay. Differentiate between psychometric and information processing approaches to intelligence. This question is from chapter 1, variations in psychological attributes. So let's begin. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको हमेशा टेबल में लिखना है. कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है, देन यू हैव टू मेक अ टेबल. इफ़ 2 क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन 2 पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है विद एग्जाम्पल्स. सो व्हाट इज़ अ साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड व्हाट इज़ एन information processing approach? Psychometric approach, this approach considers intelligence as an aggregate of abilities. So psychometric approach का मतलब क्या होता है? Intelligence as an aggregate of abilities. Aggregate of abilities का मतलब क्या होता है? Aggregate का मतलब sum. The sum of abilities is our intelligence. It expresses the individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities. So how do we express this and what is the meaning? So meaning and expression. Second is information processing approach. First is psychometric approach, मतलब intelligence का aggregate of abilities, मतलब हमारी sum of abilities को हम intelligence बोलते हैं. और इसको कैसे express करते हैं? In terms of single index of cognitive abilities. Next is information processing approach. This approach deals on how an intelligent person acts. इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है. साइकोमेट्रिक अप्रोच मतलब सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, और यहाँ पे जिसके पास ये होता है वो कैसे एक्ट करता है. सो इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है? पहले बात तो इंटेलिजेंट पर्सन की एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ को साइकोमेट्रिक अप्रोच में लाते हैं, फिर वो कैसे एक्ट करता है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में लाते हैं. इट मोस्टली फोकसेस ऑन एम्फसाइजिंग का मतलब उस पर फोकस करता है. Studying cognitive functions underlying intelligent behavior. So that was 2 marks question. Second question, state any 2 techniques of self-regulation. Any 2 techniques of self-regulation. So वहाँ पे या तो ऐसे भी आ सकता है कि आपसे 2 टेक्निक्स पूछें, या फिर कोई ऐसी टेक्निक पूछेंगे और उसको आपको डिफाइन करना होगा. So read all the techniques. This question is from chapter 2, that is self and personality. The answer is self-regulation. ना कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर से, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है उसको. आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है. सबसे पहले होता है इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंट्रो में क्या आएगा? हम सेल्फ रेगुलेशन को डिफाइन करेंगे. अगर क्वेश्चन ये वाला आया है तो सबसे पहले अगर इसमें हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं बोला जाता है तो हम साइकोमेट्रिक अप्रोच को डिफाइन करेंगे. तो द फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रो. फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्जाम्स में. सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? उसका इंट्रो करने वाले हैं. सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर. सो ब्रेक द आंसर इनटू फ्यू पार्ट्स एंड देन यू हैव टू राइट. सो व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? दिस कम्स अंडर इंट्रो. एबिलिटी है हमारी किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए. किसको? अपने खुद के बिहेवियर को. तो सेल्फ मतलब ओन बिहेवियर. ऑब्वियसली सेल्फ कोई और थोड़ी होगा. सेल्फ मतलब आवर ओन बिहेवियर. रेगुलेट करना मतलब ध्यान रखना. ध्यान रखना मतलब एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर. तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ मतलब ओन बिहेवियर, रेगुलेट कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइज करके और मॉनिटर करके. सो सेल्फ रेगुलेशन क्या हो गया? टू एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर. रेगुलेशन मतलब ओन बिहेवियर, सेल्फ मतलब आवर ओन. नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आर एज फॉलोज. अब हमसे क्वेश्चन में 2 टेक्निक्स पूछी गई हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना. पहले हम इंट्रो देंगे. This consists of 1 marks. This consists of 1 marks. Observation of our own behavior, that is, this provides us with necessary information that may be used to change, modify or strengthen certain aspects of self. Observation of own behavior. हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं? पहले हमको अपने आप को जानना पड़ेगा ना, मतलब observation of our own behavior. Second is self instruction. Make sure to underline the headings and make box of your headings and underline the keywords and write in intro, then body, then conclusion. We often instruct ourselves to do something and behave the way we want to.
Such instructions are quite effective in self-regulation. Like you made New Year resolutions on every year. You make certain targets for every week, like I have to complete this, I have to complete that. So these are self-instructions. We impose these on ourselves and it helps us to grow. So whenever we are talking about self or personality or improving ourselves, so these are some techniques of self-regulation. Self-regulation क्या होता है? Self मतलब ओन बिहेवियर, रेगुलेशन मतलब कैसे रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करके और ऑर्गेनाइज करके. अब इसी का पॉइंट बना दिया है. ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? अपने आप को इंस्ट्रक्ट करके. और मॉनिटर कैसे करेंगे? मॉनिटर मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करना. यू गेट दैट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन आपने बहुत कॉमनली लोगों को यूज़ करते हुए सुना होगा, बट साइकोलॉजी में हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है. यू कांट जस्ट मेक फन ऑफ एंग्जाइटी, कॉलिंग यू लाइक सम पीपल कॉल देमसेल्व्स दैट वी हैव OCDs and all that thing, but there is a certain definition of everything in psychology, and once you fall into that category, then only you have the right to call yourself like that. So let's begin. Explain the term frustration. Whenever they are asking for explaining the term or defining, then we have to write first intro, then body, then conclusion. फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? ये साइकोलॉजी एंड लाइफ वाले चैप्टर में से चैप्टर 8. फ्रस्ट्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रेशन. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? सीड से ही तो फल आता है, तो एग्रेशन से आता है फ्रस्ट्रेशन. आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं. पहले लिखेंगे एग्रेशन, फिर उससे हमको क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन. ऐसे ही थोड़ी कोई चीज़ आ जाती है. एग्रेशन मतलब क्या होता है? गुस्सा. गुस्से से क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन. It is an emotional state, okay, that arises when a person is prevented from reaching a goal or attaining an object that she wants. You want to score 90%, but due to some reasons or health reason, you didn't score 90, you scored 80 reasons. So now you are angry also, you are sad also, and now you are frustrated. So make practical examples out of the questions and then you will be able to portray yourself properly. So what is a frustration? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जब भी हम साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं. ये कहाँ से आया है? चाहे हम एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम बिंज ईटिंग की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे किसी भी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है. उसका बर्थ कैसे हुआ है? तो फ्रस्ट्रेशन का बर्थ कहाँ से होता है? एग्रेशन से. इट इज़ एन इमोशनल स्टेट दैट अराइजेज व्हेन अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग अ गोल. प्रिवेंटेड मतलब कोई आउटसाइड एक्सटर्नल कंडीशन से वो प्रिवेंट हो रहा है. और अटेनिंग एन ऑब्जेक्ट दैट शी और शी वांट्स. द पर्सन मे बी वेरी क्लोज टू द गोल एंड येट डज नॉट अटेन इट. You have studied every day and night to reach that 99% goal, but due to some reasons you couldn't score. You are very close to the goal. You used to solve papers, you used to give tests, you used to do everything, but you still do not attain it. So it will lead to aggression. You will be emotional and it will lead to frustration. It has been found that people in frustrating situations show more aggression than those who are not frustrated. Okay, now one of your friends scored 99%, okay, and he's very happy. And you, on the other hand, who prepared for 99% score 80%. So obviously the person with 99% will be will be more happy and will not show any aggression. But on the other hand, you who scored 80%, but you are very close to your goal and now you are very sad. So now you are very aggressive. Now that will turn into frustration. Give the examples, okay? So जो लोग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में होते हैं वो ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं. नाउ अगर आपके 88% आए हैं तो ऑब्वियसली आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, अपनी फैमिली में कुछ बात नहीं करना चाहेंगे. तो उसका मतलब क्या होता है? आप में एग्रेशन है, तो आपके अंदर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा बिकॉज यू कुडंट स्कोर 99%. Now what are norms? अच्छा, this is very important when we're talking about chapter 7, that is social influence and group process. Group process and norms are very important. Norms क्या होते हैं? Now this is a 2 marks question, and how you will define it. First the body, then intro, body, and then the conclusion. Norms are expected standards of behavior. Expected standards, that's what we expect from you. Norms are expected standards of behavior and beliefs established, agreed upon and enforced by group members. It's okay, that's how the society works, that we have certain norms. Like whenever you're going to the temple or the mosque or the church, or whenever you're going to the school, you have to wear the proper uniform, tie, a belt, and your socks length should be this way. Or whenever you are giving tests, then these all the things are which are not allowed in the classroom. So these are the norms. You can't just walk into the classroom with your laptop in your hand, right? So these are the expected standards by the school, by any organization of behavior. That's how you will behave.
You can't talk aggressively to your teachers. You can't behave in a bad manner, impolite manner in the school, because there are norms that you are a girl or a boy and you have expected standards. You have to behave and in a certain way, and there are beliefs established, because when the child will be dressed properly, the disciplined behavior will come into him. He will gather the disciplined behavior and agreed upon. All of them will agree that yes, इसको ऐसे कपड़े पहनने हैं, इसको टाइम पे आना है, इतने पीरियड्स होंगे क्लास में. तो दीज आर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स. ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग बिहेवियर के. बिलीफ्स इस्टेब्लिश होते हैं, एग्रीड अपॉन होते हैं, एनफोर्स्ड बाय ग्रुप मेंबर्स. एनफोर्स्ड बाय ग्रुप मेंबर्स मतलब ग्रुप मेंबर्स कहीं के भी हो सकते हैं, लाइक अ सोसाइटी, अ स्कूल, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग. So whenever you are going into an institution, there are certain norms which are obviously established, and they are the standards of behavior. They are agreed upon and enforced by group members. In your family, there are norms that guide the behavior of family members. Okay, so we all have families, and सबका family same नहीं होता, because we have certain norms. That's how the families differ from each other. We have other types of norms. These norms represent shared way of viewing the world, because I have certain norms, but that's how I behave ना. So that's how I view the world. Because जो मैं करती हूँ उसका मतलब मैं सोचती हूँ कि वो अच्छा है, तो मुझे जो अच्छा लगता है क्या पता वो दूसरे को अच्छा ना लगे, तो दूसरा जो करता है उसके लिए वो अच्छा है. तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो नॉर्म्स है, हम जो फॉलो करते हैं, उससे हम क्या देखते हैं, इट रिप्रेजेंट समथिंग. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? डिफरेंट व्यूज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड. ओके, स्टेट एनी 3 स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होता है और उसको हैंडल करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज. सो दिस क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजुडिस के MCQs भी आ सकते हैं. चैप्टर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो व्हाट इज एटीट्यूड एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, लाइक ABC, एंड हाउ डू यू डिफाइन देम, व्हाट फॉल्स अंडर व्हाट कैटेगरी. So now, knowing about the causes or the sources would be the first step in handling prejudice. Like if you are having fever, you are having 99-degree or 100-degree fever, so the first thing is ki knowing the reasons, knowing the sources. If you have eaten something bad or if it's because of the weather change. So किसी भी चीज़ को हम कैसे डील करते हैं, पहले उसका रीज़न पे जाते हैं ना, ये हुआ कैसे है, to eliminate the reasons. The strategies for handling prejudice would be effective if they aim at. So how they would be effective? We have written 4 points. Minimizing opportunities for learning prejudices, changing such attitudes, de-emphasizing a narrow social identity based on the in-group, and discouraging the tendency towards self-fulfilling prophecy among the victims of prejudice. So first, हमको sources पे ध्यान देना है और फिर इन points पे ध्यान देना है to deal with the strategies to control the prejudice. Next question is, what do you understand by type C personality? That is self and personality. What is type C personality? First of all, what is a personality? This is from that is chapter 2, self and personality. Personality क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. And answer is, how do you understand by type C personality? Type C personality को हम कैसे जानते हैं? That is Morris. नेम याद करना बहुत ज़रूरी है, नेम कोट करना बहुत ज़रूरी है. Morris has suggested a type C personality which is prone to cancer. This can be also included in your MCQ questions. Who has included? Morris, and it is also lead to prone to cancer. Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive, and patient. So what are people characterized by this personality? They are cooperative, they are unassertive, and they are patient. They suppress their negative emotions, that is anger, and show compliance to authority. So whenever we are talking about certain personalities, now we are talking about type C personality. So it was propounded by Morris. It has suggested a type C personality which is prone to cancer. Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive, and patient, and they suppress their negative emotions, that are managers. Suppress करना मतलब कम करना. वो अपने emotions को, negative emotions को suppress करते हैं. Negative मतलब anger, positive मतलब when we are happy, when we are joyant, when we are amusant. So and when we are very joyful and blissful, there are other positive emotions. Negative emotions means when we are angry, when we are sad, when we are aggressive, and show compliance to authority. So that was it for your psychology 2 marks important questions. This acts as a last minute revision for you guys, and if you want me to make another important videos, then do let me know in the comment section, and please subscribe my channel. Thank you. Best of luck for your upcoming examinations.